they were very convinced in their own physical prowess. पठान है हम, तुम हिंदू हो, लड़ना नहीं जानते, बनिए हो बेसिकली। आप लोग जानवरों की, पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। These are the words I remember. बंदर मूर्ति गाय की पूजा करने वाले बनिए हैं आप लोग गुलामी भूल गए हैं, अब हम आपको बंदूक की नली पे गुलामी याद दिलाएंगे। तो मैंने कहा यार क्या 4-5 भिखमंगे तुम्हारे जैसे आ जाते हैं, जनरल किसी पॉलिटिशियन का लड़का तो आ नहीं रहा है, भूखे नंगे लोग आ जाते हो तुम, पनियाल के नीचे किसी को पता भी नहीं क्या हो रहा है, रहो 1 साल 2 साल, किसी दिन आओगे ठोकोगे, खा ले मरोगे। Sir, Major Abhay Narayan Sapru sir, I mean amazing legacy. बहुत जगह से in terms of his personality, he being in the armed forces, military, then the special forces. He's a marathon runner. He's an author. More or less, we connect. More or less, I am not from the special forces, but being with the Marcos for a couple of years, and then an author and marathon runner also. So बहुत कुछ मिलता है. So sir, thank you, and a fan moment for me, sir. Jai Hind, sir. Thank you very much, Bijay. It's a pleasure to be on your podcast. Sir, so sir, I have heard your podcast earlier. So where traditionally हम podcast में पूछते हैं कि sir आपने फौज क्यों join किया and all those things. But I heard a line wherein आपने बोला था, I think रणवीर के podcast में, you wanted to join army because you wanted to prove a point, sir. Father को you wanted to prove a point कि ना जाना ही है करके. You are from the FAUJI background. So what exactly was that story, sir? Yeah, Bijay, my father was away most of the time. He was half Commani, half paras, and I think most of our childhood he was out of the house traveling. So my mother was very keen कि भाई बच्चे फौज नहीं ज्वाइन करें। तो शुरू से हमने पूरी कोशिश करी कि ये कहीं ना कहीं और जाए, लेकिन फौज में ना जाए, तो सेपरेशन इज टू मच। तो उनकी बात सुनते हुए मैं चला गया दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहाँ कमरे में मिले मुझे बिहारी, एंड द कॉन्वर्सेशन वाज ऑल अराउंड कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है, एमबीए करना है, बट मोस्टली सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस ये करना है। तो हमने भी उसी लत में ऑनर्स कर लिया हिस्ट्री में। और लास्ट डे में जब मैंने इनको देखा पढ़ते हुए, मैं तो धुएं उड़ गए यार, जिस हिसाब से ये पढ़ सकते थे। दे कुड पुट इन 12-12, 13-13 घंटे, 14 घंटे यार ऑफ नॉन स्टॉप एकेडमिक रिगर। मैंने कहा यार ये तो नहीं हो सकता है। और बैकग्राउंड में तो था ही, एट सम स्टेज यू हैड ऑलवेज इंस्पायर्ड टू बी अ सोल्जर, ड्रीम्ड अबाउट बीइंग अ सोल्जर। कमांडो कॉमिक्स पढ़ी थी आपने, तो मैंने कहा यार या तो माँ की बात सुन लो या बाहर ऐसे ही घूमते रह जाओगे, ये आईएएस आईपीएस नहीं हो सकता, आपके बस के बाहर है। And that is when I sat for my OTA and my IMA. तो मैं उनमें से बेवकूफों में से हूँ जिसने OTA करा 4 महीने समर टर्म, which is a bad thing. Yes, people will tell you junior term Madras in summer is a much worse condition में आप पास आउट करते हैं than a winter course. तो 4 महीना वो करा, उसके बाद कॉल आ गई IMA से। मेरा घर मेरा IMA से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थ्रू द टी गार्डन था। तो टेम्पटेशन वॉज टू ग्रेट। मैं वहां से फिर आई में पहुंच गया, मैंने फिर ट्रेनिंग शुरू करी। तो 4-5 महीने वो लिए, फिर 18 महीने ये लिए, 2 साल ऊपर से ज्यादा ट्रेनिंग करी बेवकूफ की तरह। एंड देन एट सम स्टेज आई डिसाइडेड टू जॉइन द स्पेशल फोर्सेस। दैट हैपेंड इन द एकेडमी। बट रीजन टू जॉइन आर्मी था कि बेसिकली यू कुड बी अ मैनेजर, यू कुड बी अ सेल्समैन, यू कुड बी एनीथिंग एट एनी टाइम इन योर लाइफ, बट वो जिंदगी में एक ही बार चांस मिलना था, उसका एक टाइम और एक वक्त होता है। आपने वो कर लिया तो आप ज्वाइन कर गए, नहीं करा तो आप कहीं 35 साल पे नहीं बोल सकते कि मैं फौज ज्वाइन करूंगा, या 40 साल पे आप ज्वाइन करेंगे। तो एक वो डिजायर था, एक तमन्ना थी, वन फॉलोड दैट एंड गॉट इनटू द एकेडमी। But then sir, like since you are from the army background, father was in the army, but बचपन से कोई और करियर की तरफ हिंज होने का दिल नहीं किया सर? लाइक अदर देन, ठीक है, आर्मी वाज वन एस्पेक्ट जहाँ आप जा सकते थे। नहीं यार, as I told you कि my mother by the time I was joining college, she had dissuaded us कि एनडीए मत दो। हमारे वालिद साहब कह रहे थे एनडीए, हमने दोनों भाइयों ने कहा एनडीए नहीं देंगे।
और the personality, our father's personality was a very strong personality. Not that he was forcing us, but वो उनके अपने तरीके से ये कन्वे हो गया था कि देखो यार, सेल्समैन वेल्समैन तो ये सब करते हैं. If you're a real man, then do something which I am proud of. तो गए वहां पे IAS IPS और MBA के प्लान से थे, लेकिन वो रियलाइज किया कि यार कैपेबिलिटी भी कोई चीज होती है ना, एफर्ट किस में डाल सकते हो. आई कुड पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट फिजिकली. फौजी के बच्चे, वी ग्रो अप आउटसाइड, गेम्स खेले आपने, तो फिजिकल वर्क केम मोर इजी टू अस. मेरा छोटा भाई वो माउंटेनियर बन गया. He became a very serious climber. Nanda Devi also, and then he joined the tea gardens, which was again an outdoor job. तो वो भी फौज में ज्वाइन करने के प्लान में थे कि मैं 9 पैरा ज्वाइन करूंगा, बिकॉज इट्स अ माउंटेन वॉरफेयर स्पेशल फोर्सेस. तो उसको तो किसी तरह डिसवेट किया, मैंने भी डिसवेट किया कि यार दोनों भाई मत आओ, एक तो रहो, एक तो बाहर रहो. तो फिर चेंज हो गया, तो एक बार फौज में आ गए तो फौज में आ गए. बट फ्रॉम द बिगनिंग आई न्यू कि ये परमानेंसी नहीं है. ये कर्नल साहब को, हमारे जो वालिद साहब हैं, हमारे हम सर करते थे उनको, इनको पॉइंट प्रूव करना है, बिकॉज ही थिंक्स कि ऑल अदर प्रोफेशंस आर नो गुड. And if you're a rail man, you have to come and prove a point. And a point can be proved only if you join the army and you join the parachute regiment or his Kumar battalion. तो मैंने कहा लीजिए कर्नल साहब, आपके लिए एक फौज ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन कितने दिन ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपको पॉइंट प्रूव करके मैं निकलूंगा. So वो जो जनरल माइंडसेट होता है ना सर, लाइक व्हेन वी आर इन एकेडमी, लाइक OTA, लाइक आई वाज इन INA, बट जैसे वो एक आधा जो स्टिपुलेटेड टाइम होता है ट्रेनिंग का, वो खत्म होने वाला होता है, तो यू आर लाइक अच्छा चलो खत्म. बट अगेन आप OTA से IMA में जो गए, वो माइंडसेट कहीं आया नहीं कि फिर से ट्रेनिंग करना पड़ा. ऑफ कोर्स उसके बाद स्पेशल फोर्सेस तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इंटरमीडिएट पीरियड जब सब लोग पास आउट होते हैं, and then you would be like again to do everything back in IMA. How is that, sir? नहीं, बट मैं तो चौथे महीने के बाद निकला ना OTA से. हाँ, एक और टर्म बचा था मेरा, एक और टर्म बचा था. बट यार देखो, अगर आदमी को शॉर्ट सर्विस लेनी थी, छोड़ना ही था फौज, जो कि आई वाज क्लियर कि आई एम नॉट गोइंग टू लास्ट आउट वेरी लॉन्ग, आई शुड हैव स्टक अराउंड इन दी OTA. तो वो तो गलती हुई. बट वही है कि घर मेरा पास में था, आई वाज मिसिंग होम. मैंने कहा यार 2 किलोमीटर, आई टू सी ऑल द एकेडमी गाइस, JCs मेरे दोस्त थे जब मैं कॉलेज में था. तो वो द चार्म ऑफ गोइंग बैक होम टू देहरादून. और उसके बाद उसका नतीजा क्या हुआ, एकेडमी में 66 पनिशमेंट्स थी मेरी. मतलब एंड ऑफ द टर्म द इंस्ट्रक्टर्स आर टेलिंग मी कि सप्रू डोंट टेक एनी मोर पनिशमेंट्स फॉर गॉड्स सेक, अदरवाइज यू विल बी रेलीगेटेड. और कंपनी CSM बनाया हुआ था अपॉइंटमेंट, और CSM आधा टाइम पनिशमेंट पे रहता था. और इसलिए क्योंकि मुझे वो द डिजायर टू जंप ओवर द वॉल एंड रन थ्रू द टी गार्डन टू माय हाउस टू हैव अ मील वाज टू ग्रेट. पीछे वो उनको पता था ये 2-3 लोकल लड़के हैं, पीछे वो फॉलो हो जाता था, पहला नाम लिया जाता था सप्रू. अब कितना कवर करोगे सप्रू, फिर घर बैठे में वापस आओ, 7 days रिस्ट्रिक्शंस, 14 day रिस्ट्रिक्शन, वो करते करते 66 बन गई. फाइनली दे वर काइंड इनफ टू से यार प्लीज घर मत जा, अब यहीं बैठ, पास आउट हो जाओ टाइम पे. तो वो डिजायर टू गो होम था, और कुछ नहीं था यार. तो जो फर्स्ट टाइम सर, टिपिकली फर्स्ट टाइम जब आपने वो कदम उठाया कि घर जाना है, एकेडमी से जंप मार के, व्हाट वाज दैट मोमेंट? बिकॉज एकेडमी के अंदर तो वी ऑल नो सर कि कैसे होता है कि पनिशमेंट को डर के, या जो उस्ताद होते हैं या DO होता है. सो हाउ वाज दैट फर्स्ट टाइम सर? बाकी तो ठीक है, आगे तो होता रहेगा. फर्स्ट स्टेप तो ये था कि पहले स्टेप में ही पकड़ा गया मैं, क्योंकि देहरादून ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट ऑफ पीपल टू द एकेडमी. तो इन एनी कॉज वो काफी लोकल लड़के आपको मिल जाएंगे. तो उस्तादों को पता था कि इस कंपनी में इतने हैं, इस कंपनी में इतने हैं, और उसको पता था कि ये कहाँ से निकलते हैं. तो मेरी कंपनी लकली मिली भी पीछे, बिल्कुल टी गार्डन है. इफ यू बीन टू देहरादून एंड टू द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देयर इज अ टी गार्डन देयर, एंड द पार्ट ऑफ द एकेडमी जट्स इनटू द टी गार्डन. तो आप एक बार दीवार कूदिए तो उसके बाद वो टी बुशेस शुरू हो जाती है. आधा टाइम वो ये वहां पे एम्बुश लगा के बैठे होते थे, टॉर्च वॉर्च लेके. अब तो ये एक अलग गेम चलता रहता था बिटवीन द लोकल्स कि कैसे उस्तादों को बुद्धू बनाना है, क्या यार ये पकड़ेंगे, या फिर वो चेंज हो जाती थी कई बार. वो पीछे से चिल्ला रहा है, मैं पहचान रहा हूँ, रुक जाओ, भागे जा रहा है अंदर. पकड़े गए तो मिल गए 14 दिन, नहीं पकड़े गए तो आप भाग गए, फिर वो वापस आए. तो ये रेगुलर ड्रामा चलता रहता था वहां पे, of excitement of jumping and going home. But just going home and having your bloody mother's food
वाज द ग्रेटेस्ट थिंग। ले लेंगे यार 5 Seriously. दिन, कोई बात नहीं है। मैं घर जाके बाप के साथ बैठे हैं, अपनी माँ के साथ क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, अभी वापस जाके फिर शुरू हो जाएंगे, यार कहाँ फंसा दिया आपने हमें, खाना तो खिलाओ यार माँ। खाना वाना खाया, वापस पहुंचे, लक अच्छी है तो बच गए आप स्नीक इन करके। वहां जब तक फॉलन हो गया तो हो गया यार, सपुर कोशिश करी तेरी बचाने की, लेकिन फिर लग गई तेरी। ठीक है यार, अभी खा लेंगे पनिशमेंट, आदत पड़ गई ना, उसके बाद खाना खाओ और पनिशमेंट लो। So other than ये adventures, one thing which you remember, both OT and IMA में ऐसे कुछ होता है ना sir, all of us फौजी we यार have a ओटीए, funny. ओटीए का तो यार द हीट किल्ड मी। मैं जिंदगी Okay. भर मतलब पहाड़ों में रहा था। आई ग्रो अप पार्टली इन शिमला एंड देन देहरादून, एंड देहरादून इज इक्वली pleasant weather and cold in winters. The Madras heat was the first time I was exposed to heat. So they used to, in those days, they used to have something called boot belt dangri. और खाने के साथ वो एक पूरा टेबल स्पून आपको सॉल्ट डालना पड़ता था अपने पानी में। वो आपने डाला और कंपल्सरी था। वो देखता रहता था सीनियर, हैव यू पुट योर सॉल्ट। वो 1 चम्मच सॉल्ट मिला के आपने पिया और वापस आए आप लंच खा के, वो बूट बेल्ट डांगरी वो बाहर आपको धूप में रख देते थे, पैर ऊपर करके, इन बेंड पोजीशन, पैर ऊपर करके। यार 10 minutes was more than enough. You would have a pool of water around you. और जो आपने खाया पिया पानी से सब, the heat was fantastic here. It was killing. So I found the heat terrible. And that experience, and many years later, I've never liked Madras. I have never ever liked Madras यार। मुझे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ऑफर आए 1-2 कि आप मद्रास जाइए, इतनी सैलरी बढ़ेगी। मैं कहा मुझसे जेब से ले लो यार पैसे, मैं जाऊंगा नहीं। मैं जहाज से उतरता हूँ, मुझे वो पहाड़ दिखता है जहां एक पहाड़ है, as you step out of the airport in Chennai. Correct. So there was a gentleman, I forget his name, who got a PVC in Sri Lanka. He was a postmate of mine. Sandhu नाम था मेरे ख्याल से उसका, तो परमवीर चक्र मिला। He died very early in Sri Lanka. I forget his name. I think it's Sandhu. Yeah, PVC. हाँ, ये परमवीर चक्र है in Sri Lanka. उसने, आई रिमेम्बर, ऊपर गर्मी में वहाँ नेविगेशन की कुछ क्लास चल रही थी उस टीले के ऊपर। दिस इज, यू कैन सी दैट टीला राइट व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ दैट एयरपोर्ट इन चेन्नई। वहां उसने कंपास घुमा दिया, वो हो गई शुरू। तो मौका चाहिए, हो गई शुरू। अब सब वहां ऊपर पहाड़ के ऊपर से वो रोलिंग शुरू हो रही है गर्मी में, पता नहीं क्या क्या कराया जा रहा है। तो द होल ब्लडी एक्सपीरियंस वाज सो नास्टी दैट इवन नाउ इफ यू आस्क मी टू गो टू चेन्नई, ऐसे जाने की जरूरत ही नहीं है। That bloody city doesn't exist. I have bad memories through and through. The IMA was much better. वो ठीक है, पनिशमेंट ली, लेकिन घर जाते रहते थे आदमी। Chennai was a bad experience that way. IMA was fine. Yeah. I was all right. You know, it's a great comfort to have your house. Yeah, very true, sir. If you can, every weekend, if you can disappear and go to your house, that itself is good enough to keep you going for the next 5-6 days. But you know, for a man like me, from a university background, the whole discipline and the whole thing, not for me. I disliked it. Disliked it. So how was, like if I come back to that, how was Cadet Abhay Sapru different when he was a junior and when he was a senior, sir? यार देखो, पनिशमेंट तो थ्रू चल रही थी। अब मुझे बना दिया CSM. And you know, the CSM of a company is responsible for discipline, for motivation of the company, for ऐसे ही चलता रहा यार। कंपनी एकेडमी ऐसी निकल गई हमारी, आधा पनिशमेंट आधा भाग दौड़ करके। But I do recall that having decided from the OTA and the moment I joined the Indian Military Academy that I had to join the paras, special forces, उस जमाने में parachute commando unit बोलते थे, वो तो later आया। I never shammed a PT parade or a punishment parade. That is the only thing I ensured. चलो academic भाड़ में जाए, tactics ना समझ आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। But वो उस्ताद कहता ना punishment के लिए उसको टच करके आओ, पहले 5, पहले 3। मैं हमेशा तेज भागा, जितनी मेरे में जान थी, because my running was poor. I said, yeah, the only way I can improve is to put in my effort and not sham as far as physical is concerned, because these ex-Indians are fitter. 4 साल से भाग रहे हैं, कुछ सैनिक स्कूल से आते हैं यार, they're very fit people. Correct. आप यूनिवर्सिटी से गए हैं तो योर अपर बॉडी इज स्ट्रांग बिकॉज आपने वेट्स करे हैं, जिम किया है, कुछ करा है, बट योर रनिंग एंड एंड्योरेंस इज वीक, सो दैट हैड टू बी बिल्ट अप। तो कोई मैंने शैम नहीं करा, कभी शैम नहीं किया।
मैं हमेशा सीरियसली अपनी रनिंग करने की कोशिश करी. जब थर्ड टर्म आया, लोग रिलैक्स करने लगे, मैं पिट्ठू लगा के उसमें ईंटें डाल के, एंड आफ्टर दैट द एकेडमी हैड आल्सो बिकम थर्ड टर्मर्स के लिए थोड़ी रिलैक्स हो जाती है पासिंग आउट के 3 महीने पहले. आई वुड पुट इन माय ब्रिक्स 15 kg, then run through the tea garden 10 12 15 किलोमीटर, back to my house, eat a meal, come back running with all that weight. तो लोग रिलैक्स कर रहे थे, मैं अपना ईंटें लगा के वो चल रहा था. तो 20 दिन की छुट्टी हुई, उसमें भी मेरी ईंटें चलती नहीं, वो ब्रेक लगा के वेट लगा के भागना, बिकॉज आई न्यू कि अब SF यूनिट में जा रहा हूँ, वहाँ प्रोबेशन है. तो बाय एंड लार्ज इट वाज नॉट टू बैड, नॉट टू बैड. But then, sir, I also heard this in your interview. You had said about, the professionalism and career. This caught my attention there. So, para में जाना, special forces में जाना was always destined पहले से कि मुझे जाना ही है करके, or it just happened? My father had 2 battalions. He commanded a command battalion in 71 war, which got a theater honor. So his career was that he was commissioned into the command regiment, into a command battalion, which converted to 3 para. Oh. So automatically he became a half paratrooper and served with 3 para. So the choices from the beginning were very clear. Either I'll go to 9 command or I'll go to 3 para. It was a normal para battalion. The SF angle came in much later. तो डेस्टिन का सवाल है. डेस्टिन तो था कि 9 कुमाऊं होगी या 3rd पैरा होगी. ये SF का जो था नशा, ये बाद में आया बिकॉज ऑफ एन एक्सपीरियंस इन द एकेडमी. इट वाज लेटर दैट आई डिसाइडेड आई अप द एंटी एंड प्रूव अ पॉइंट टू माय फादर कि आप तो पैरा तक गए, मैं पैरा कमांडो में आ गया. अब तसल्ली हो गई आपको कि पॉइंट हो गया. इफ दिस इज व्हाट यू थिंक अ मैन शुड डू, देन दिस इज व्हाट आई एम डूइंग बॉस. अब तो छोड़ दो यार. So how was father's reaction, sir? Uske baad? No, I am sure he was very proud. In fact, by the time I decided to leave the army, which was at about 9 years, it took 4 applications. They were not leaving me. I had 9 ribbons. So I still remember the conversation after he had a few drinks. I said, I wanted to broach the subject. I want to leave the army. He smiled. He said, I always knew you were a bit of a sissy. मैं कहा सिसी यार, फिर वही बात करती है. 9 साल मेरी यूथ निकल गया आपको पॉइंट प्रूव करने में. I said, how many ribbons did you have? And he been a combat soldier. यार, his chest was full of ribbons. Gaza से 1957 Gaza strip से it started soldiering. So I said, यार अब क्या और करना है यार, कितने रिबन थे आपके पास 9 साल सर्विस में? He said, 4 5. I picked up a lot more ribbons later on. So I said, यार 9 रिबन है यार, अब क्या चाहिए आपको यार? I started with Assam. I was in Ulfa of Bajrang when the Ulfa problem erupted. I was in Sri Lanka. I was in the northeast for cross-border operations. I spent 3.5 years in Kashmir. That bloody broke my back in peak militancy, 95 to 97, with a new raising. And that also a commando RR raising. That was called a Son of the Soil concept. It was then a very secret project where they had Kashmiri Muslims from Jackali battalions. They threw in some Dogras, and then they threw in paratroopers and a handful of about 30 odd parachute commando or special force guys. So the commanding officer was from an SF unit and self or 15-20 or, and the whole objective was कि ये locals हैं, they'll fight better, they'll garner intelligence. It was the new Son of the Soil concept that they wanted to try. It had been tried in Rhodesia years ago by the Celeste Scouts, where the locals would infiltrate amongst the militants. So, that was the plan. And sir, it was not easy raising that unit. तो उनको रेज करके उनको कॉम्बैट में ले जाना, फिर 3.5 साल तक घूमते रहना all over the bloody state. That broke my back and I said, यार कर्नल साहब अभी तो मुश्किल हो जाएगी. Though I got a chance to be an ADC with 2 army chiefs. So that was the only break. And then my final posting was the parachute training center in Bangalore, which is when the army is finally, after my 4th application, said, all right. And my father had landed up with cancer and stuff like that. So when they left me. But it was an intense 10 years of hard soldiering. Hard soldiering. Except for Siachen, which is my regret. I could never go.
everything else was covered. That was happening in those days. We will cover this segment. I just wanted to, a lot of youngsters they said, it's the age of social media, and probably we are here a bit late. Their generation, a lot of this, it's one way. I'm so happy to see that now people are giving respect to the armed forces, the veterans, and they are taking interest in the stories, and many of them are motivated. और बहुत सारे लोगों ने फौज ज्वाइन भी की थी from the time I'm doing this podcasting, and lot of them सर पहला क्वेश्चन यही होता है, पहला यही कि आर्मी नेवी एयरफोर्स नहीं ज्वाइन करना है, सीधा एसएफ या मार्कोस. सर मुझे एसएफ बनना है, मार्कोस बनना है, गरुड़ बनना है, बताओ क्या करना है. तो पहला तो मैं उनको यही बोलता हूँ, पहले तो फौज ज्वाइन करिए, पहले वो काबिल तो बन, वहां तक पहुंचे करके. So my question here is, sir, वो mindset, what exactly would be the mindset to join the parasf? Because मुझे मालूम है sir, I have seen very very closely. हर एक बंदा अलग होता है sir. हर एक बंदा, you take a sailor जो हमारे मार्कोस के sailor, मार्कोस के officer. I have seen parasf, jawans and soldiers and the officers. Each one of are different. I have interviewed many of them, sir. हर एक, you are like, आप super cool हो, मस्त हो. Vivek is a different guy. Sushant is a different guy. So what is the mindset, sir? The mindset for the parasf guys or the Marcos or the Garud guys? Because it's not easy, sir. Because it's not हर एक बंदे का काम नहीं है. मैं बता रहा हूँ, sir, frankly. Yeah, first is a desire to be a little different. It's important that you feel that you need to do something. You're there for soldiering, and therefore, whichever unit provides you the best form of soldiering, you are there to do exactly that. As I said, the difference between career and general. Academy में आपको काफी मिलेंगे अब जो आपको बिल्कुल उनका वर्कड आउट है, क्या करियर होगा, क्या मूव्स होंगे, वो अभी से प्लान करना शुरू कर देंगे. मेरे टाइम पे भी थे, अब तो खैर और कॉन्शियस हो गए. So they will join accordingly. Some already work out कि मैं 10 साल करना है, 15 साल करना है, तो मुझे सिग्नल्स में जाना है या टेक्निकल आर्म में जाना है या आईटी में जाना है, व्हाटएवर. बाहर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं. तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं जनरल बनने के लिए तो ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ. मैं ज्वाइन कर रहा हूँ फॉर द प्योरिटी ऑफ सोल्जरिंग, for purity of soldiering and unorthodox soldiering. Now that is why some of these units, SF units, will draw people who are misfits. They are romantics, they are adventurers, they are loners. They are different from the average run of the mill. उसके temperament में कुछ ना कुछ अलग है which he wants to do. After that, यार, it is all a question of clearing the probation, and the probation is tough. It's not impossible. I have seen very fit people. It's not necessary that you have to have a body. मैंने बॉडी बिल्डर्स फेल होते देखे हैं, मैंने फिट लोग देखे हैं, मैंने कमांड एथलीट देखा है फेल होते हुए. आप देखिए अगर एसएफ यूनिट में वो पतले पतले मिजरेबल लोग आपको दिखेंगे, बहुत ही मतलब my son, who's every youngster today, his idea of SF is from the SEALs team and the Hollywood movies that they see. वो ग्लासेस लगे हुए हैं, 6 फीट 2 इंच का आदमी है. तो आपको एसएफ यूनिट में, इंडियन एसएफ यूनिट में बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी, बिकॉज आपको बिल्कुल मिजरेबल बंच ऑफ पीपल दिखेंगे. वो भाग भाग के सबकी छातियां अंदर है. बट व्हाट दे हैव इज अ वेरी लार्ज हार्ट. दिस, व्हेन आई वाज डूइंग माय प्रोबेशन, द ओनली थिंग दे वुड से, साहब कमांडो यहाँ है, गोड्डे में नहीं है. आप दिमाग तगड़ा है तो पास हो जाओगे, यहाँ से कमजोर हो गए तो आप चले जाओगे. एंड दे वुड डू एवरीथिंग in a probation to see where that chink in the armor was. मतलब एक छोटी सी adage थी which they used to follow, that you don't know how much is more than enough unless you have experienced how much is more than enough. So you don't know how much is more than enough unless you experience something which is more than enough. अब वो more than enough में आपके खींचते चले जाएंगे till they found कि आपका ट्रैकिंग पॉइंट कहाँ है. तो मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से बात करी, 2 ICO कमांडिंग ऑफिसर से. अभी रेजिंग डे के लिए गया था मैं. अच्छा. तो मेरा सवाल यही था, यार,
कि यार ये अब तो ये सोशल मीडिया, मेरे टाइम पे तो ना कोई बात करता था ना कोई लिखता था. My generation and a generation before saw a lot of combat, saw a lot of tough life. And those were tough days of soldiering. Nobody wrote, nobody spoke, and nobody in CV Street was interested, frankly. Exactly, sir. Now this has become the flavor, special forces. So I asked the commanding officer, I said, yaar, ye अफसर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? वॉलंटियर कहता सर आ रहे हैं. वॉलंटियर का बड़ा शौक है एसएफ का. तो मैंने कहा क्वालिटी तो नहीं गिरा रहे हो यार? कहता सर सवाल क्वालिटी का नहीं है, सवाल ये है कि परफॉर्मेंस करते हैं और फिर एकदम से हिम्मत टूट जाती है. कहता अभी एक वापस गया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास परफॉर्म कर रहा है. इंटरनली हम कह रहे हैं यार ये लड़का ठीक है, आई थिंक ही विल गेट सिलेक्टेड. 2 महीने हो गए, 1 महीना और रह गया उसका. कहता सडनली खड़ा होकर बोलता सर आई नीड टू गो बैक टू माय यूनिट. अब बोलता मैं कमांडिंग ऑफिसर उसको समझा रहा हूँ कि यार व्हाट इज रॉन्ग, व्हाई आरंट यू स्टेइंग बैक? ही सेज इट्स द ऑपोजिट नाउ सर, आई शुड बी टेलिंग हिम गो ऑफ. दिस इज एग्जैक्टली हाउ थिंग्स यूज्ड टू हैपन. गो बैक. वो शुरू से आपको पहले ही बोलना शुरू कर देते थे कि यार नहीं जाओ यार, जाओ जाओ, हमें नहीं चाहिए, जाओ, वी डोंट नीड यू, गो होम, पैक अप, व्हाई आर यू गोइंग थ्रू दिस? They would always trying to discourage you. Kehta, here I am telling this guy ki yaar you have a good chance, why don't you stay back? He says the youngster today is fascinated by the glamour, but he doesn't have the consistency to take punishment. He comes, he immediately wants to wear the beret, get badged, and be this great special forces chap and put it on Instagram or whatever, which is not allowed, but the glamour of being there. But he says he doesn't have the ability and to sustain punishment, which is where things are lacking. He says they're coming, which is a good thing. The volunteering is not stopping. In fact, it seems to have gone up. But the quality that comes cannot take punishment. So the initial phase, they'll impress you with, whatever training they have done. But over a period of time, they start cracking. And that is not something to do. It's a extension of the generation today. It's a Maggie noodle generation. Nothing to, some very fine kids are now. They're breaking records and everything. But that's an individual group of people who are breaking records. That Nimsdai has climbed all the 8,000 peaks in 6 months. All your world records are getting broken. It's the new generation which is breaking them. But it's the handful of people who are doing it. The bulk of the people, the overall society seems to have become soft. Which is no blame to them. Everything comes to your doorstep. Everything is on a call. मैं पलटन जाता हूँ तो मुझे खुद दिख जाता है डिफरेंस. ऐसे नहीं तगड़े लड़के हैं, सब बच्चे अच्छे स्ट्रांग हैं. But I can see the difference कि in my time अफसर के अंदर 1-2 अफसरों के पास बाइक थी. So from every place we had to run or walk. सुबह पीटी के लिए आप भाग के जाते थे, वहां से भागते थे मेस में खाना खाने के लिए, लेट ना हो जाए भाग के वापस बैचलर्स क्वार्टर्स, गेट रेडी, रन अगेन बैक टू ऑफिस. It's all walking, running. That itself in the whole day would constitute to about 8-10 kilometers of walking and uphill on a mountain. Now even the Jawans have bikes. Somewhere it's going to have an effect. So either you compensate it with more physical work. So that softness has crept in. Otherwise, you're a determined man. There's no question, unless he gets injured, there's no question you can stop him. There's no question. Yeah, I remember, sir, those days. Though I'm 10 years later to you, but एक बाइक अगर ऑफिसर ने ले लिया, that too after 3-4 years of service, it was a big achievement. पहले तो सब ताली मारते थे, नहीं तो एक यूनिट से दूसरे वहां तक पहुंचने के लिए we used to run, even as an officer. So that's a huge change which has happened. And जैसे आपने कहा सर, वो instant gratification वाला जमाना है, everyone want to be. इसलिए सर जो I started the question with that कि किसी को फौज नहीं ज्वाइन करना है, सबको जाना है स्पेशल फोर्सेस, मरून भेजे. आप अगर देखोगे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे, आई वुड बी लाइक आदो का ये जो प्रोफाइल पिक्चर वुड बी गरुड़ या ब्राउन बेरे या ब्लैक मार्कोस. नथिंग रॉन्ग इन इट, बट वहां जाके ब्रेक हो जाते थे. वहां जाके आई हैव सीन लॉट ऑफ दिस यंगस्टर्स डूइंग दैट. No, it's a very tough life, yeah. Bijay, you know it. It's a very tough life. It's a very demanding life. I remember, and I give this example. Once I remember, firstly, we preferred to be in combat than be in station.
because at least you could do things when you were in a combat area. You could sleep when you wanted to sleep and operate at your own will. पलटन के अंदर तो एक थोड़ा डिसिप्लिन भी है, ऊपर से ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, गेम खेलते नहीं थे, सिर्फ ट्रेनिंग करते रहते थे, ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटिव काम है आपका, तो इट बिकेम पेनफुल and the speed of events in the training was so much that I recall once I'd gone for my basic jump आगरा, और ट्रेन में गर्मी में वो सब, उस जमाने में हर चीज टफ थी यार, तो आपने जंप फिनिश किया एंड आई रिमेम्बर 102 फीवर था आगरा में मुझे, मैंने अपने 5 जंप्स खत्म करे, 3 जंप्स थे जो भी थे, मैंने ट्रेन पकड़ी, मैं वापस आया अपने बेस अप इन द माउंटेन्स, मैं घुसा था कि मुझे बोला गया कि बस गिर गई है कुरुक्षेत्र में, वहां पे बॉडीज पड़ी हुई हैं उसके अंदर, और वहां से उन्हें दे रिक्वेजिशन फॉर डाइवर्स, तो नॉर्थ इंडिया में कुछ भी होता था ऐसा तो उस तरफ उधमपुर में 9 पैरा वाले जाते थे, इस तरफ हमारे लोग जाते थे, तो मैं कुरुक्षेत्र पहुंचा, वहां 4-5 दिन मैंने डाइव किया ठंडे पानी में, बॉडीज निकाली, मैं वापस आया डाइविंग टीम के साथ, तो मुझे बोला खाली लगा मुझे सारा पलटन, मैंने कहा है, बोला सर शिव साहब एंड सारी की सारी पार्टी माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग के लिए चले गए ऊपर चूड़धार, तो 12,500 11,000 पे, तो और शिव साहब ने बोला आपको आना है, तो पिट्ठू 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 वही पिट्ठू गया, 1 टन जा रही थी राशन की, उसमें बैठा, और 4 दिन बाद में करीब 14,000 पे बैठा हुआ हूँ, वहां बैठ के मैंने सोचना शुरू किया, मैं कहा यार 12-13-15 दिन के अंदर मैं जहाज से कूद गया, मैं पानी के नीचे कहीं घुस गया कैनाल के अंदर, और ये पहाड़ के ऊपर बैठा हूं मैंने कहा यार ऐसे तो आदमी खत्म हो जाएगा यार स्पीड पे, तो ये तो पॉज ही नहीं है कोई, तो दिमाग ही नहीं चल रहा है, इतनी स्पीड इन्हें रखी हुई है चीज की, तो sometimes speed was, and there was so much movement, they were constantly moving, there was constantly separation, so it's not an easy life. It looks all very fine when you wear it, and you get the respect, you got the respect in the army, you made some very fine friends, they were very fine bunch of people, solid people, they were distinctly different, but there was a sacrifice that you had to make in all aspects, and which is why the unit has this, the policy is very simple, after the probation the system is also designed that if you are not pulling your weight, आप अपना नॉन कमांडो डाल दीजिए, चले जाइए अपनी पेरेंट यूनिट, like my parent unit is for Madras, Walia light infantry, very fine unit, और अगर आप नहीं कर रहे हैं perform to the expectations of the unit, the CO has the right and the authority to send you back. So at any given time, the body of men who are there are trained to perfection, to muscle memory, I would say, in peak physical conditions, with ability to operate in all terrain. Any weak link is immediately taken out and sent back home. So तो शौक की बात है, कोई 10 साल लास्ट किया मेरे जैसा, कोई 5 साल में भाग गया, कोई 15 साल लास्ट किए, तो काफी लोग छोड़ देते हैं, बहुत आपको अब देखिए ना कितने लोग बाहर आपको मिलेंगे एसएफ से, किसी ने 5, किसी ने 7, किसी ने, डिपेंडिंग ऑन हिज इंटरेस्ट, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच सोल्जरिंग ही डिड, द मोमेंट यू आर रनिंग आउट ऑफ स्टीम, बिफोर यू किक्ड आउट, यू गो होम यार, और जो रहना चाहते थे, जिन्हें करियर बनाना, तो वो बैठे हैं, दे स्टिल स्टक अराउंड. In fact, sir, वही when I was in Marcos East के कलिंगा में जब था, तो lot of friends I made, lot of sailor friends, ड्यूटी पे साथ में होते थे, गार्ड रूम ड्यूटी. So I used to ask, एक सतेंद्र बोल के बंदा, now he retired as NCPO है, उसको मैंने पूछा था कि ना भाई तेरा मोटिवेशन क्या है, तो तू हरियाणवी है, which is itself is a motivation. He all are special होते but simple soul sir. वो मुझे टिपिकल हरियाणवी इसमें बोला सर मेरा जो मोटिवेशन है एक्स्ट्रा राशन मिल जाता है करके, चॉकलेट आता है, अंडा आता है, दैट वाज the jars used to come because and especially your diving jars were there only for tip money and extra diet. वो डिप मनी मिलता था आप लोगों को, तो हमारे हमारे जाट भी के सर नेवी में इनका कंप्लेन यही रहती थी, सर नेवी को वो डिप मनी मिलता है और एक्स्ट्रा मक्खन मिलता है और ये बादाम मिलता है, तो क्या तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा यार, बट उसकी मोटिवेशन उतनी थी. आपको मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं, एट वन स्टेज द यूनिट सेट कि यार सारे टाइप के लोग आ गए हैं, गुरखा नहीं आए यार, तो गुरखा कुछ लेने चाहिए यार, तो मेरी पोस्टिंग हो गई एज एडीसी, मैं चला गया, 2 साल बाद आया तो सडनली आई सी वेरी स्ट्रैपिंग लुकिंग गुरखास वॉकिंग अराउंड,
वो निम्बू, राणा, गुरुंग, द मार्शल रेस टाइप, और एक को डिटेल कर दिया एज माय बडी, JB राय को। तो मैंने राय से पूछा, मैंने आई वाज आल्सो इंट्रीग कि ये छोटा सा गोरखा बेचारा कहाँ फंस गया यार, ये सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं। मैंने कहा राय तू कैसे फंस गया भाई यहाँ पे SF में, थर्ड गोरखा का था या किसका था? बोलता सर ऐसा है कि ये पहले तो ये ओम प्रकाश साहब आए जाट, उसको हम भेजते थे मोटिवेशन के लिए, गॉड ब्लेस हिज सोल, ही जस्ट डाइड। उसको सारी वर्दी पे उसके हम लगा देते थे कपड़े, चीजें उसने करी भी नहीं थी वो भी लगा के उसको जाया, और बाल लंबे, इतनी लंबी 6 फीट 3 इंच का आदमी। कहता ये आया सर पलटन में, वहां इसने लेक्चर दिया, इसने यही बकवासबाजी करी कि खाना मिलेगा, डाइट एक्स्ट्रा मिलेगी और पैराशूट से कूदोगे। तो बोलता सर हम 5-6 लड़के खड़े हो गए, वो JB राय एक और आया हुआ है, उसने बोला सब पैराशूट से कूदने का बहुत शौक था, तो हमने कहा चलो पैराशूट से कूदेंगे, बहुत शौक है पैराशूट से कूदने का। बोलता फिर यहाँ आए सर, तो यहाँ तो सर वो रगड़ा बंद चलता रहा, तो 5 आदमी से तो 3 चले गए या 2 चले गए। राय मुझसे बोलता पता नहीं ट्रेनिंग हो रही है कोई, तो मैंने कहा ट्रेनिंग हो रही है। ना लुक एट द सिंपलिसिटी ऑफ दीस गाइस यार, हाउ सिंपल कह रहा है, गुरखा ऑफिसर, गुरखा जवान भी है। बोलता 3 महीने तक रगड़ा मारा, और राय बोलता रहा अब तो पक्का पैराशूट का जंप होगा होगा, उसकी ट्रेनिंग होगी हार्ड शायद। 3 महीना रगड़ा खाने के बाद बोलता वो सीओ साहब ने खड़ा करा और वो हरी पर टोपी उतार दी और एक लाल टोपी लगा दी और बोला अभी तुम 1 पैराशूट कमांडो। हमने कहा सर वो जंप क्या हुआ? So the guys, can you imagine, these poor guys went through 3 months of probation, not knowing they are going through probation, just to do parachute jumps. They had no intentions. They wanted to go back to their unit. They went through 3 months of hell just to get parachute jumps, and not once did they ask anybody कि हो क्या रहा है बॉस लाइफ में यहाँ पे यार, क्या कर क्या रहे हो हमारे साथ? तो मैं कहा खुश है अभी? बोलता अब तो जा ही नहीं सकता सर, अब तो जो यहाँ का सीन है ये सीन देख लिया, फ्री स्टाइल सोल्जरिंग देख ली, अब नहीं जाने का गोरखा बटालियन में सलूट वलूट ऐसे करने की जरूरत नहीं है। बट आई वाज अमेज्ड बाय द स्टोरी ऑफ दिस गाय कि आए वो पैराशूट जंप करने आया था बेचारा बस, और फंस गया पलटन में। तो अलग अलग मोटिवेशन है यार, जवानों की अलग है। हिमाचली आते थे बिकॉज पलटन हिमाचल में थी, फॉर देम फिजिकल वाज नॉट टू मच। मैं कहा ठीक है यार क्या है, भाग दौड़ कर लेंगे जो करनी है, क्या है, लेकिन सर घर ये है, ऊना में है या पहाड़ के ऊपर है, तो लगा घर के पास पलटन है। Everybody was different, had a different motivation, but then the unit would mold you into its own culture, and every SF unit had its own culture in a specific manner. In fact, अभी when I met them, तो lot of them अभी उनको पता है कि सर I have a podcast, मैं मैराथन दौड़ता हूँ। एक बंदा who's age wise senior to me, he's again ऑनरी सब लेफ्टिनेंट करके मार्कोज ही रिटायर्ड, तो उसने मुझे वैसी टिपिकल छेड़ते हुए पूछा कितने में भागते हो सर करके ना, फुल मैराथन आप बहुत बहुत किए हो सुना करके। तो मैंने बोला कि टिपिकल 445 440। बोलते ये तो मैं अभी भाग लूंगा करके, खड़े खड़े भाग लूंगा। फिर बाद में मतलब मैं आपको छेड़ रहा था करके। so that was the simplicity and the love. One more thing sir, like you can choose not to answer this question, but abhi since there was an announcement that women officers can also be into the special forces, so what's your take on that? Not because of anything, I'm one of those who want this change to happen, jo bhi hua sir, it's a progressive change, but ye question pe, since you are from the special force, what's your take on this sir? Yeah, before I give you my take on it, I was seeing a documentary in which the American Army conducted a 6 months, the US Rangers conducted a 6 months exercise. They put a pure male team, pure female team, and a mixed male and female team, and they ran through an exercise for 6 months as a study for women in combat situations. And just to prove to Panetta, I think, who made this remark, that the American Army will now start putting women in frontline as combat soldiers into Rangers and other SF units and stuff like that. So this was an exercise carried by the generals. And on all metrics, the pure women team failed. And you have an interview, documentary पे देखना वो है मेरे ख्याल से YouTube पे, उसमें वो खुद कह रही है, कहती I can't match, I can carry the weight, I can't match her stride is big. In shooting they were better,
In navigation, they were better. In living rough, they were better. So I'm saying a very simple thing. The Israeli special forces, the Shariat Matkalan people, they use women often, but not in their regular SF units. If you can clear the probation, I'm sure some usability can be found for women in operations. But please clear the probation. The standards should not be diluted. If you can, by all means. But I doubt it. It's not an easy thing because it doesn't end in just clearing your probation. It's a very rough life after that. And some of the operations are not comfortable. आपको रहना पड़ता है बड़ा रफ यार. एक बार श्रीलंका में घुसेड़े थे, कैंप हिट करना था. 7 दिन बाद जंगल से बाहर निकले. I remember tearing my underwear inside my dangri because वो chaff होने लगी, तो I tore my underwear, threw it away. ना पानी है अंदर, ना खाना आपको मिल रहा है, वेट चढ़ा हुआ है, फायर आता है आप पे. और ये तो एक टेरेन है यार. उसके बाद पहाड़ पे आप कश्मीर में जब वो निकलता है पेट्रोल, यार इट्स नॉट एन इजी लाइफ. आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए. It's I'm gender agnostic यार. Everybody should be given a chance. But I don't see it happening. I'd rather not. And I'm not getting into specifics. Regarding societal changes. I am just limiting myself to a physical aspect. I am not even discussing that your men are from rural backgrounds. They come from paternalistic societies, right? They have a certain idea of what a woman is and what she should do. So, society needs to change. The men have to change. The outlook towards women has to change. So there's a whole bunch of other issues that I'm not even getting into. मैं तो ये कह रहा हूँ, चलिए वो सब चीजें हो जाती हैं, सॉर्ट आउट हो जाएंगी. आप फिजिकल तो क्लियर करिए पहले. करिए, बिल्कुल करिए. So sir, पूरे career में now coming to that special thing, spanning 10 years, आपने बहुत सारे, you have always been a hardcore soldier, not a cushy posting, not a कहीं बैठ के बाबूगिरी or nothing like that. How was that? How difficult was your tenure in Kashmir, sir, 95 to 97, wherein आपको इकवान जो रेस करना था, जो the local youth and the Dogra and the unit में जो तमाशा हुआ होगा that time. How tough it was, sir? Yeah, it was tough. I think anybody. So the officers also, bulk of the officers were from J&K. So the names were Salatia, Jasrotia, that kind of names. I'm a Sapru, I'm a Kashmiri Pandit. I fitted into the bill very fine because they wanted locals. I think if you asked any officer, he would say probably the toughest command that he ever had was raising that unit. Simply for the fact that I think every officer had to be very cautious on how he commanded these men. So first was the challenge of just putting this whole team together and then teaching them how to conduct themselves in special operations. Now, there are various aspects to how special force teams operate, especially in small numbers. Everybody has a skill set. The drills are perfect. So we managed to train them how to move from point A to point B. But a very important aspect in any combat situation, especially in insurgencies and militancies, is when to fire. That is one of the most difficult questions to answer. To take that risk of firing at a suspicious movement where no weapon is seen, or not to fire. When to fire, तो ये चीज जो है ये सिखानी आसान नहीं है. तो वो जल्दी फायर खोल देंगे तो खुलता चला जाएगा. कितना खोलना है, कितना फायर करना है. Because temperamentally you're not volunteered for an organization. You haven't been put through a selection process. You've just been posted there. And then so it was a challenge to lead a motley group of people from different backgrounds who didn't want to be there. And yet everybody was doing what they had to do and to show results. And I'm not saying everything negative, but because we had some
good intelligence coming in. We had some surrenders coming in, which was what was expected. But overall, it was tough. And this is peak militancy. Correct. Peak militancy. अब देखिए उस जमाने में एक मस्त गुल होता था, वो घूम रहा था. इफ यू गो ऑन इंटरनेट यू विल सी ऑल दिस. मस्त गुल थे, वो घूम रहे थे वहां पे. चरार शरीफ में ड्रामा हो रहा था, वहां पे वो आके बैठ गया था मस्त गुल. वो चरार शरीफ जला दिया. फिर वो हॉस्टेज 5 किडनैप कर लिए. एक की बॉडी वो गर्दन काट के, उसकी लवली बुक है द मेडोज बाय दोस ब्रिटिश ऑथर्स. आई आल्सो मेंशन इट इन दिस I was about to tell. Because one of our teams. Yeah, so to all who are listening, sir ka ye third book mentions about that Masgul ke bare mein, about that 5 tourists who were kidnapped. Yeah, sorry to cut you off, sir. I read it, wonderful book, sir. मजा आ गया एकदम. So ये सारी चीजें उस वक्त हो रही थी. Peak militancy. हम लोलाब आप जाते थे तो it was like a cricket commentary. आपका रेडियो सेट खुलता था 8 बजे सुबह, वो बातचीत शुरू हो जाती थी. And you know, it was frontier town, people with beards and weapons, and it was bristling. There was palpable excitement in the air. ये पता है यहाँ बैठे हैं, बातें चल रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम. तो नाइन घूम रही है, यू क्रॉसिंग ईच अदर, एक टीम आ रही है, बातचीत सिर्फ यही होती, कॉन्टैक्ट, केल्स, कैजुअलिटी. आपको पता ही नहीं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है. आपकी जिंदगी वाज नैरोड डाउन टू व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड इन दैट वैली. 4 मार दिए, मैं उधर बैठा था, वहां एम्बुश लगाया. So the days were different. The challenge was that, yes, leading a new bunch of people, and not only us, everybody who raised a RR unit in those days will tell you it was a very challenging command, because nobody wanted to go into the RR. Nobody wants to go and fight with people or put themselves in risk. It can be not only for combat, it goes for mountaineering, for any sport where risk is involved and where a team goes in. You always want someone who you can rely on. And faith and trust and reliability is not built overnight. It takes time and training. So वो चीज missing थी. But overall, you know, in hindsight, tough days, great experiences. Any one-on-one between any, जैसे होता है ना सर, एक ऑफिसर होता है तो एक टेररिस्ट होता है, जो आपस में बहुत प्यार होता है, जिसका ना कि चुन के नाम बोलेगा, रे सप्रू आज आ गया फिर तो टाइप्स. आप नहीं यार देखो, नाम पहले तो नाम मेरा नाम सैफुल्लाह था ऑन द रेडियो सेट. सो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, इतनी वहां पे बातचीत चलती रहती थी दैट यू रिकॉग्नाइज वॉइसेस. मुझे पता है ये. But I'll tell you some interesting experiences, conversations. One of them was सुबह माइक चाली था एक, जो पोस्ट पे बैठता था, पाकिस्तानी पोस्ट पे, मेरे ख्याल से लोसर 1 पे बैठता था. तो वो सुबह इनका अटेंडेंस लेता था. 7, 7:30, 8 बजे उसका वो रेडियो सेट खुलता था. एंड देन ही हैड अ लिस्ट. शैशवार, बुधवार, 333, 444, 888. Assalamu alaikum, walaikum salam. Maybe he's ticking off, you know, station alive. So he had to report back. So one of those occasions. फिर शाम को क्लोजिंग जिहाद का एंड ऑफ क्लोज डे, फिर वो रिपोर्ट जाती थी वापस कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो शाम का टाइम था, मेरे ख्याल से 4, 4:30, 5 बजे. सडनली यू नो माइक चाली, एवरीबॉडी कुड हियर हिम. रोज का काम था ये. तो माइक चाली अपनी रिपोर्ट ले रहा था. Suddenly one station piped up. Assalamu alaikum, बड़ा excited, local Kashmiri station. Assalamu alaikum. हाँ सब खैरियत है? बोला सब खैरियत है जनाब. कुछ है? बोला हाँ आज क्रैकडाउन हुआ था, शुमराल गांव में क्रैकडाउन हुआ था. सुबह में गया था कुछ इन्फॉर्मेशन पे. वहां पे जंगल से फायर किया मुझ पे, कुछ इधर से हमने फायर किया, बस बात खत्म हो गई, हम भी वापस आ गए, पार्टी खत्म हो गई. अब वो शाम को रिपोर्ट दे रहा है, शुमराल गांव में क्रैकडाउन हुआ जनाब, और फौज की नफरी आई और हमने फायर खोला तो बहुत लोग मरे. फिर इनका हेलीकॉप्टर आया और बर्ड कैजुअलिटी हुई, हमने हेलीकॉप्टर पे फायर. तो मैंने कहा यार तो हद ही हो गई यार झूठ बोलने की. मतलब आई डोंट जनरली इंटरवीन, अपनी रिपोर्ट कर रहा है, करने दो, बट नाउ दिस इज टू मच. सो आई सेड अस्सलाम वालेकुम माइक चाली.
बोला आओ फौजी भाई रास्ता छोड़ दो, मैं अभी रिपोर्ट ले लूँ। मैं कहा नहीं भाई चाली, गलत बात हो रही है, जिहाद चल रहा है, ये आपका कमांडर झूठ बोल रहा है, कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ, कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया, कोई फौज की कैजुअलिटी नहीं हुई, और ये गलत रिपोर्टिंग हो रही है। मैं खुद था उस गांव में यार, ये जंगल से फायर करके भागा है, और मैंने कहा यार गलत रिपोर्टिंग कर रहा है इसलिए मैं, अब माइक चाली देखिए मुझे क्या बोलता है, बोलता है फौजी भाई छोड़ दो, हमें पता है फौज में कैसी रिपोर्टिंग होती है, आप लोग भी तो गलत गलत रिपोर्टिंग करते हो और फिर मेडल लेते हो। वो परसों एक मेरे साथ ही इंसिडेंट हुआ था, somebody got shot whatever, बोलता है परसों मारा ना एक आदमी, फिर उसका बनाया लंबा रिपोर्ट, कितनी बहादुरी दिखाई आपने। तो मैंने कहा माइक चाली मैं तो हेल्प कर रहा है यार आपकी, ये गलत रिपोर्टिंग, जिहाद ऐसे कैसे चलेगा। बोल तो आप छोड़ दो जिहाद, हम पे छोड़ दो, हम कैसे चलाते हैं आप। मैं कमाल है यार, ये जिहाद नहीं चल सकता इस तरीके से। एंड यू नो अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ दैट, many years later now when I look back I realize कि the moment you have people like that, this is how jihad goes for a six, first class चल रहा था, साले झूठ बोल रहे हैं, खुद भी रिपोर्टिंग गलत कर रहे हैं। Long conversations I would have with some of these leaders, and the place used to be packed in those days, Bijay, with very counterfeit notes. You know, इनकी सैलरी आती थी पूरी काउंटरफीट नोट्स में आती थी, और बर्फ जब पड़ जाती थी तो उनकी सैलरी बंद हो जाती थी, फिर रोना शुरू करते थे ये इतना वो पैसे भेजने थे, पैसे भी नहीं आए। Had one of these chaps who I'd been after, chatting him for very long time, visiting his house, उसकी बीवी के पास जाऊं, उसके घर पे जाऊं। Finally he said, okay, I'll surrender. So he surrendered, we got him down. तो मेरे साथ ऑपरेट करने लगा, तो एकदम मुझसे बोलता है कि मैंने कहा यार ये दिला दे तू एक जो भी है ऑपरेशन में, तो तेरे लिए मैं टेप रिकॉर्डर खरीद दूंगा कैंटीन से कुपवाड़ा में। बोलता हाँ जनाब खरीदेंगे। और एकदम आई वेंट टू हिज हाउस, ऐसे चल मैं जा रहा हूँ, अरे तो तुम्हें चलना है तो कैंटीन से टेप रिकॉर्डर खरीदवाते हैं तेरे लिए, पैसे हैं तेरे पास। तो वो लकड़ी का ट्रंक पड़ा था, उसको खोला, दैट इज स्टैक्ड विद मनी। तो मैंने कहा यार तू जब बैंक लूट के आया है सलीम, क्या करके आई, कहाँ से आए इतने पैसे। बोलता ले लो आप उठा लो एक गड्डी। तो मैंने कहा ये सच्ची असली है कि, बोलता है छोड़ो ना यार, आप उठाओ गड्डी अगर आपको चाहिए। मैंने कहा भाई तुम्हें ये साला सब काउंटरफीट नोट है, लेके गया। मैंने कहा मैं कैंटीन के बाहर खड़ा हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैं कैंटीन मेजर को बोला, मैं कहा यार ये है हमारा साथी इन्फॉर्मर है, इसको जो भी चाहिए कैंटीन से दिला दो। मैं बाहर चले गया, मैं कहा अगर पकड़ा गया तू तो सारा सामान खरीद के लाया। बोलता कौन पकड़ा जा रहा है सर, पूरा कश्मीर चल रहा है काउंटरफीट नोट पे, कैंटीन क्या पकड़ेगा मुझे। वो जमाने अलग थे यार, वो वाइल्ड डेज, वाइल्ड डेज। और अब जाओ, अब कुछ नहीं है। 12-15 साल से मैं रोज 10 साल स्कीइंग करने जाता हूँ। आई एम गोइंग अगेन इन फेब। वेरी पीसफुल यार, बट इट टेकन अ लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम, 20 years of लॉस ऑफ ब्लड, लेबर, एफर्ट, बट जिस हाल तक पहुंचा दिया उसको 20 साल लग गए। लेकिन वो जमाने आप देखते तो वाइल्ड कंट्री, एब्सोल्युटली वाइल्ड कंट्री इट यूज्ड टू बी। Very true, sir. Very true. So, sea change, like जब आप लोग थे, that time would have been the peak of militancy and killing left, right, center. Whatever was shown in couple of movies also, Abhi sir. I mean, that was the hostile situation there. So, hopefully things are improving वहाँ पर sir. We'll see. So, how's the terrorist mentality, sir? Generally, जैसे फौजियों का mindset we spoke of a para guy. How their mentality, sir? Because Yeah, I spoke to, we'll forget about the local Kashmiri militant. Any society, howsoever docile and peaceful it may be, and the Kashmiri was Sufi culture hota tha. If it is exposed to violence over a period of time, people harden. So we'll keep the Kashmiri militant out. But जो मैंने बात करी ये पाकिस्तानी मिलिटेंट से, जो लीडरशिप थी वो पंजाब की होती थी, इतना मुझे पता है, पंजाबी में बात करते थे। एंड व्हाट आई फाउंड स्ट्रेंज वाज कि जो पंजाबी में या जो उर्दू में मैं उनसे बात करता था, मेरे अपने कश्मीरी हैं जो जिनसे मैं कश्मीरी बोल नहीं सकता हूँ, जिनके साथ उर्दू और हिंदी भी एक्सेंटेड है उनकी, और यहाँ ये हैं जिनके साथ मैं लड़ने आया हूँ, मेरी जुबान और उनकी जुबान बिल्कुल मिल रही है। वो पंजाबी से गल कर रहे हैं, मैं कहा हूँ गल कर यार, तू उर्दू बोल रहा है, बिल्कुल साफ उर्दू बोल रहा है। बट द लीडरशिप वाज
मोस्टली पंजाबी या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के थे, गिलगित, स्वात, मुजफ्फराबाद के थे. They believed in their cause. There is no doubt about it. As one of them told me कि कल रूस को तोड़ा था, आज हिंदुस्तान को बिखरता देखेंगे. They were very convinced in their own physical prowess. पठान हैं हम, तुम हिंदू हो, लड़ना नहीं जानते, बनिए हो. बेसिकली आप लोग जानवरों की, पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं. These are the words I remember. बंदर मूर्ति गाय की पूजा करने वाले बनिए हैं आप लोग गुलामी भूल गए हैं. अब हम आपको बंदूक की नली पे गुलामी याद दिलाएंगे. तो मैंने कहा यार, क्या 4-5 भिखमंगे तुम्हारे जैसे आ जाते हैं, जनरल किसी पॉलिटिशियन का लड़का तो आ नहीं रहा है, भूखे नंगे लोग आ जाते हो तुम, पनिहाल के नीचे किसी को पता भी नहीं क्या हो रहा है. रहो 1 साल 2 साल, किसी दिन आओगे, ठोकोगे, साले मरोगे. तो look at his answer. He says पहली चीज तो भूखे नंगा नहीं हूं मैं. सीनियर गाय, इसे भूखा नंगा नहीं हूं. 120 बीघा जमीन है मेरी और 3 गांव का पटवारी हूं, और कोई पहली बार नहीं आ रहा हूँ जिहाद कश्मीर के लिए, तीसरी बार आ रहा हूँ. ये मैं 96 की बात कर रहा हूँ. देखो, बोलता है ये आपका मैंने बम्बई कलकत्ता देख लिया है, और मैं समझ गया हूँ कि अभी इंसान की कीमत कम है यहाँ, मुर्गी की कीमत ज्यादा. अभी आप जैसे छोटे मोटे आदमी मारने बंद, अब हाथी की सूंडें काटेंगे. I still remember his conversation, imagine so many years later. अब हाथी की सूंडें काटेंगे. अभी आप परसों देखिएगा दिल्ली में क्या होगा. Look at this man is telling me, an unknown militant is telling me in Lolab, and 2 days later there were transistor bombs which exploded in Delhi, in Sarojini Nagar वगैरह. कई साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था of terrorism. This chap is telling me they're sitting up in Lolab. You know, they were running this very organized thing, which the country then finally woke up to realize that it's a concerted, planned effort to break the country. But nevertheless, this is his conversation, and he told me, he says, किसी ने धक्का नहीं दिया, कफन पहन के आया हूँ और यहीं मरूंगा. और एक चीज उसने मेंशन करी, which is strange. Very few people would have read it in history, because I'm a history student, I had read it somewhere. He says, भूल गए नेहरू साहब के साथ क्या हुआ था. Nehru, when independence struggle was on, to garner support, he made a trip to the northwest frontier. क्योंकि पठान ज्वाइन नहीं किए थे, तो he wanted them also to join this freedom movement. So ये अब्दुल गफर खान मेरे ख्याल से had organized a rally for him somewhere on the northwest frontier. वहाँ पे एक वो लश्कर, मतलब बुजुर्गों का जिरगा बुलाया गया, अफगानों का, पठानों का. तो वेट करते नेहरू साहब का जहाज लेट हो गया, तो रेस्टलेस होने लगे वो सब पठान वहाँ पे बैठे बैठे, कहाँ है नेहरू, कहाँ है नेहरू. तो नेहरू साहब ओनली 2 घंटे 3 घंटे लेट पहुंचे. तब तक दे वर इन अ फाउल मूड. 3 घंटे से पठानों को वेट करा दिया था. एंड ही मेड द मिस्टेक ऑफ स्टार्टिंग हिज स्पीच बाय सेइंग, कब तक गुलाम रहोगे हिंदुस्तान अंग्रेजों के. एंड वन वाइज एंड ओल्ड पठान गॉट अप. अगर पंडित जी ऐसा है, गुलाम आपकी कौम, पठान किसी का गुलाम नहीं है. आइंदा गुलाम की बात करी तो ये काट देंगे नीचे से. That was the end of Nehru's effort to get any support from Northwest Frontier. तो वो ये इस आदमी को पता था कि नेहरू वहां आया था, मोहम्मद गौरी पता थी, मोहम्मद गजनी पता था, ये सब कुछ उसको पता था. जब उसको याद दिला और रंजीत सिंह ने क्या किया, हरि सिंह नलवा ने क्या किया, तो उसको कुछ नहीं पता. वो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का रूल था, वो उसको पता है. महमूद गौरी आया, आपको गुलामी, आप गुलाम थे, 800 साल गुलाम थे हमारे, और 250 साल से आप बैठे हो अंग्रेजों के गुलाम. आप गुलाम हो, आपकी नस्ल गुलाम. So that was their bloody teaching in a madrasa. They were psyched up. And the best thing about this was, I said, यार आ जाओ, 3-4 दिन रहोगे, कब तक रहोगे, किसी दिन ठुकोगे, मरोगे. बोलता है जनाब पहले तो डराओ मत कि बच्चा नहीं हूं मैं, मौत से मुझे मत डराओ. बच्चे से बात नहीं कर रहे हो आप. जिस दिन आपको इंशाल्लाह मिलूंगा मैं मैदान जंग में, मैं देख लूंगा कितनी आप में है बहादुरी. मुझे मत डराओ, मुझे कोई तनख्वाह नहीं, मैं तनख्वाह लेने नहीं आया हूँ यहाँ पे.
अपने शौक से आया हूँ, किसी ने धक्का, किसी जनरल, किसी पॉलिटिशियन ने धक्का नहीं दिया है। और दूसरी चीज जनाब, हमें 50 साल लग जाएंगे, 100 साल लग जाएंगे, मेरे पीछे और है बहुत, इंशाल्लाह एक दिन टूटोगे। So there was this strong belief that I'm not expecting to see results tomorrow. I and my contribution doesn't matter. I have to do what I have to do. And it'll take 50 years, doesn't matter. We'll keep at it. We'll keep at it. Someday you'll crack. So, it's a great insight into understanding how. Once I remember talking to this chap, कई दिन बर्फ पड़ी हुई थी, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। वो एक स्टेशन खुला, थोड़ी धूप वूप निकली तो एक स्टेशन खुला, मैं कहा सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत? हाँ जनाब, धूप निकली है, यूजुअल चिट चैट हुई। ऐसे यार बाहर निकलो, कुछ नीचे आओ, गांव में आओ, कुछ फायर करो, कुछ हम फायर करें, तो क्या हो गया यार? मुझसे बोलता है ऐसा है जनाब कि अकेला आदमी बैठा हूं मैं पहाड़ पे, और आपकी 2 कंपनियां लगी हैं, फंसी हुई है ना। Look at him, how well he must have been trained, how beautifully the whole thing has been worked out by the guys, the Pakistani desk which was running the Kashmir jihad. बोलता है एक आदमी बैठा हूँ इस वैली में, मेरे वजह से 2 कंपनियां बैठी हुई हैं, रोड ओपनिंग करते हो ना, आ जाऊंगा नीचे यार, ऐसे परेशान मत हो, मतलब that kind of a thing. But I said, look at him, he knows what he has to do, he's not stupidly coming. बाद में ये फिदायीन शुरू हुए, उस जमाने में फिदायीन नहीं थे, उस जमाने में they were hardened chaps who had been diverted from the Afghan. वो वहां पे 79-80 में the Russians withdrew, 89 में the Russians withdrew, उसके बाद ये footloose थे सबके सब, a whole bunch of highly trained and experienced fighters, वो भेज दिए इन्होंने यहाँ। They were very seasoned, they would fight well, they would preserve their ammunition, very calm fighters, very good fighters. सरेंडर तो खैर था ही नहीं, ना हम लेते थे ना वो देते थे, तो बिल्कुल सिंपल सा रूल था, अगर वो उनके हाथ लग गए आप, तो वो आपका गला काट देंगे, जबा करेंगे, और ना उनका हमें सरेंडर चाहिए। तो the fight used to be till the end. Good fighter. One last question here in this section. You also served up, or Major Sudhir Walia had served together, no sir? How was your interaction with him? Because generally, yeah, Bijay, I didn't go into operations with him. As I told you, okay. It was a small valley. वो ऑपरेशनल या राजवाड़े या लोलाब, वही हंटिंग ग्राउंड होता था उस जमाने में सबका। So you would find a 10 SF team passing through, you'd find a 9 para troop coming in, you'd find our chaps going in and mixing around and sitting around. So I would run into him off and on. And personally, he was a friend. There's no doubt about it. And he, while he was still operating, had already notched up quite a few kills. And as I've said before also in some other podcasts, a lot of it is here. आप कितनी मेहनत कर लीजिए जिंदगी में, वक्त के पहले और नसीब से ज्यादा ना मिला ना मिलेगा। एंड लक इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग इन कॉम्बैट। जिंदगी में बाकी जगह तो लक ठीक है, आपकी बुरी है तो आप प्रमोशन स्लो हो रही है, बोनस कम मिल गया, हाइक कम मिल गई, जिंदगी में कुछ और नहीं होगा। लेकिन एज अ कॉम्बैट सोल्जर आपकी लक अगर खराब हो जाएगी तो आपकी जिंदगी जा सकती है। या ना, ही वाज ए लकी, बी ही वाज one of those natural fighters, which in the old Wild West, a man like him would have been called a killing gentleman. Oh, very fine term, eh? He was a killing gentleman. He was a thorough gentleman, very soft-spoken. You would never, if you met him, ever guess that this man could be so calm, so cool, and so brave in combat. And because they'd been operating in the valley for so long, they'd understood the mechanics of how and where. And the whole methodology had been taped out. So 9 para had tremendous amount of experience there. Plus the intelligence was good. Plus his thresholds. Everybody's thresholds of taking risk are different. His threshold was much higher. And that goes by pushing your luck. It's simple human nature. आप push करो अपनी luck, you get away with it. फिर आप और पुश करो, you get away with it. Then at some stage you'll say, boss, अभी कुछ नहीं हो सकता, मैंने वहां इतना रिस्क लिया, मैंने वहां. He was constantly pushing his luck, but his explanation to me was very different.
ही सेज माय मैंने आस्क्ड हिम, ही सेज मेरे तो यार बड़े कैलकुलेटेड रिस्क हैं, कोई रिस्क है नहीं एक्चुअली यार, क्लोज कॉम्बैट में अगर फायर खुलेगा, ही इज इक्वली सरप्राइज्ड, ही इज इक्वली नर्वस, आई एम मोर ट्रेन्ड, आई फायर बेटर देन हिम, नाउ वर्स्ट केस सिनेरियोज, गोली लग जाएगी मेरे हाथ में, मेरी टांग में, मेरा हेडशॉट लग जाए यार, इतना तो बहुत ही ज्यादा बुरी लक होगी ना यार सप्रू, हेडशॉट लग जाए तो एक चांस लेनी होती है यार, टांग में लग जाए, हाथ में लग जाए, बाय एंड लार्ज both of us draw together, I'll be faster. So his way of looking at it was that I know aggression in combat pays, and if I'm aggressive, I found his risk taking ability was very high. And I give you a small example, if there is time, of the difference. एक जॉइंट ऑपरेशन कर रहा था विद अनदर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका एक ट्रुप था, मेरा एक ट्रुप था, बर्फ पड़ी हुई थी लोलाब में, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड धरतपुरा, बैड रेपुटेशन, अ बटालियन हैड बीन पुश्ड बैक वंस, एक ही रोड एंटर करती थी, ट्रैक, पहाड़ तीन तरफ, जंगल, बीच में गांव, एक बटालियन वाज पुश्ड बैक वंस बिकॉज दे वुड फायर फ्रॉम ऑल ब्लडी साइड्स, और बैठते थे वहां, अड्डा बना हुआ था। So रात को बर्फ में both of us, two officers and our troop, we went into this village, और जियारत थी बीच में गांव के, वहां हमने बेस बना लिया, और सुबह जो स्नाइपर था, या तो सुबह उतरते थे नीचे गांव में, या रात को वापस जाते थे, द मूवमेंट यूज्ड टू बी लाइक दैट। सुबह स्नाइपर ने बोला कि सर जंगल से नीचे उतर रहा है कोई, so the lead scout came out, and this must have been about 400 meters, गांव के एज से वो पहाड़ शुरू हो गए, वो जंगल आया है, तो फिगर केम आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट, आके वो पेड़ के नीचे वहीं पे एज पे आके बैठा, गांव को देखता रहा, तो बोला सर एंगेज करूं, वो बोला नहीं एंगेज मत करना, पीछे आएगा अभी माल और उतरेगा, लीड स्काउट आया है, गांव को देख रहा है, देखने दे, we held back our fire thinking he'll come down, he clearly, somebody must have signaled, लाल कपड़ा लगा देना, चिमनी में धुआं निकाल देना, अगर फौज आ जाती है पता तो लग ही जाता है, फौज बैठी है आके जियारत के अंदर यार, बर्फ में निशान होते हैं, वो मिटाओ कितना कुछ भी करो। सो एनीवे, सो वही थोड़ी देर बैठ के देखता रहा, उसके बाद ही वेंट बैक इनटू द फॉरेस्ट, 15-20 मिनट तक हुआ, आधे घंटे वेट किया, कोई नहीं आया, हमने कहा खेल खत्म हो गया, तो बोथ ऑफ अस गॉट आउट। बुड्ढा आ रहा था एक, तो बुड्ढे से पूछा यार उतर रहे हैं, बोला हाँ, बड़ी बात क्या है, अभी आप निकलोगे यहाँ पे, फिर नीचे उतर आएंगे सबके सब, यहाँ चाय पियेंगे बैठ के, आधे पाकिस्तानी है, बाहर के मेहमान मुजाहिद हैं, बाकी लोकल लड़के हैं, ये अड्डा बना हुआ है। तो बोला यार कहाँ है, बोला यहाँ हाइड आउट है, इधर हाइड आउट है, किधर हाइड आउट है, बोले ले जाएगा, बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं दिखा देता हूँ कहाँ। सो वी वॉक्ड विद हिम टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट एंड द माउंटेन वाज स्टार्टिंग, एंड देयर वाज वेरी क्लीन, पुरानी बर्फ थी तो वेरी क्लीन डिस्टिंक्ट फुटमार्क्स बने थे, ऊपर जा रहे थे ऐसे करके, and disappearing into the forest, steep climb. बोलता है ये दिख रहे हैं जब पैर के निशान, इनको फॉलो कर लो, जहां ये खत्म हो गए इनका मालिक मिल जाएगा आपको, फायर खुल जाएगा, अस्सलाम वालेकुम। अब दोनों ने एक दूसरे को देखा, मौसम खराब हो रहा था, बर्फ पड़नी शुरू हो रही थी, अपहिल फाइट थी, कितने हैं ये नहीं पता, कैजुअलिटी हुई तो चॉपर नहीं आएगा, अब खड़े हैं दोनों पेड़ के पीछे, ये पता है कि यहाँ माल बैठा। मैंने कहा हाँ भाई बताइए पंडित जी क्या करना है फिर, बोला सर अभी चल सकते हैं ऊपर, लेकिन अपहिल फाइट है ये, फिर अपहिल फाइट, तो मैंने कहा अपहिल फाइट है, तो बोला आधी आधी बर्फ है, यहाँ तो घुसी हुई बर्फ, मूवमेंट नहीं, फायर खुलेगा तो मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट नहीं। अब देखिए नेगेटिव देनी शुरू कर दी दोनों ने एक दूसरे को, है, और मैंने कहा कैजुअलिटी हुई तो चौपर नहीं आएगा, यहाँ से हाथ पीठ पे उठा के ले जाना पड़ेगा, मरा तो मैं कहा पंडित जी बोलो, अब फाइनली आ गए, कल आके मारेंगे, पहाड़ के ऊपर से आएंगे। नाउ another chap, and I know a few of them, they are friends of mine, some dead, some still alive, wouldn't have thought 2 seconds, they wouldn't have, and Sudhir Walia is one of them, he wouldn't have said, डिस्कशन का कुछ तुक ही नहीं था यार, आदमी बोल रहा है आपको यहाँ पे ऊपर फॉरेस्ट में हाइड आउट है, वहां बैठे हुए हैं मिलिटेंट्स, तो फिर पीछे किस लिए रुकना है यार, चलो ये फर्क है। जब आप ये करते हैं तो आपको माल मिलता है,
Mal means, you get your kills, but you also run the risk. Yeah, very true, sir. You run the risk. So it's a risk and reward game. It's an efforts game. It's a luck game. But as I said, I was cautious. I was always thinking, I'm not going to finish jihad in tomorrow. I have to take back people who are serving with me. And too many. I shouldn't do this. I shouldn't do that. Everything has to be nice and comfortable in a combat situation. कि आप बैठे हैं, फिर सामने से कोई आ जाए तो आपने गोली मार दी. कभी-कभी होगा. But most of the decisions will come like this when you have to step out of cover and face it. तो वहाँ कौन निकल के बाहर करता है, कौन नहीं करता है. Sudhir Walia was one of those men, यार. His stories were unique. एक बार बोलता मैं पीछे भागा किसी आदमी के. ऐसी एम्बुश में बैठे हुए थे, पहला लीड स्काउट आया, मैंने फायर नहीं करा, पीछे वाला कोई आया ही नहीं, वो अकेले ही था लड़का. तो बोलता मैंने कहा ले यार एक चांस थी, वो भी चली गई. तो बोलता मैं भागा नीचे, गांव में एंटर करने वाला उसके पहले मैंने मिला, मैंने कहा रुक जा भाई, रुक जा, ऐसे करके बात कर रहा है. कैन यू इमेजिन. वो मुड़ा तो ठोका साले को, यार गांव के पास ठोका यार सपरू यार. ये मैंने कहा मतलब अब आप बताइए, आप सोचेंगे क्या करना है. मैं बैठूं एम्बुश में, उसके बाद भी हथियार है, मिलिटेंट है, 3 और हो सकते हैं. Once you allow your mind to start painting scenarios, there's so many things that can go wrong. Get you killed, your men killed. But these men take immediate decisions. They do some calculations in their mind. They take their chances. Sometimes the chance goes wrong. The consequences are very, very severe. Very severe. Oh, God bless him. Thank you, sir. God bless the man. In fact, when I was speaking to Vivek from 9 parasf, Major Vivek sir, उसने भी same यही बोला था sir. Exact what you said. It is all about who take that chance first. And Sudhir Walia sir and all अलग ही thinking ज्यादा सोचते नहीं है. नहीं ना ये वही है ना यार. रिस्क थ्रेशोल्ड्स क्या है तुम्हारे, एग्रेशन क्या है. Sir, एक question always, since I know Marcos कैसे train, dive, वो सब करके, I always used to wonder, जब parasf or the special units go into Kashmir terrain और आसाम में उल्फाज हुआ या LTTE हुआ या नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर आप लोग you are trained for probation and something ये, and then suddenly आप लोग का वहां जब when you are posted there, वहां के टेररिस्ट और वहां के जो लोकल्स है, they are much more used to those terrains and they know left right center सब कुछ. Still we are able to one notch up on them. So how does that happen? वो मुझे समझ में नहीं आया कभी. How does what happen? How does that happen कि जो हमारे जो posted soldiers है, they gel into that terrain so fast कि वो locals को वहाँ के run of the money दे देते. नहीं यार विजय, I can only talk about SF units. The infantry unit is posted there. It's posted in a place for 2 years. And then you're supposed to go out and do what is called area familiarization. If you don't do that, you don't know. Now, SF units also have their, or used to in the old days, have their own area of operation. So one particular unit was meant for mountains, one was meant for desert, one was meant for plains of Punjab and Northeast. So every 6 months in those days, a team would go and operate and familiarize themselves. Let's say if it's Nagaland, then they would familiarize themselves with how to operate in a jungle. Now you come back, their SOP is set, they are officers and men who have served in that area, have the experience, which you're going to pass on to the youngsters. And at any given time, if you're told, now move, you are in that position to move. In fact, if it's a new area, even if it's a new area, for example, Sri Lanka, we used to be picked up by chopper and dropped and attached to an infantry unit post wherever, a unit had been hit, a contact had happened, casualties had been suffered, a movement had been noticed. So we'd get attached for a couple of days, we'd operate there. The first thing we used to do is to go out at night, just walk around. You have to get that comfort of walking around. So you go out of the post, it's not an operation, it's called area familiarization.
You must know अंधेरे में ये पहाड़ जंगल कैसा लगता है. नहीं तो if you don't do that, especially at night, and most of our operations are at night, everything looks very intimidating. हर चीज आपको डराएगी. I remember ऑपरेशन था श्रीलंका में, और यंग लड़का था मैं, वो गांव को क्रॉस कर रहे थे हम, और वहाँ मेरे ख्याल से शादी हो रही थी, तो हल्की सी म्यूजिक की आवाज आ रही थी, और उस लाइट में हमने लैंप लाइट जलाई हुई थी. लैंप लाइट में एक सिल्हूट दिख रहा था, एज इफ ऑफ अ मैन सिटिंग देयर विद अ वेपन. 20 मिनट तक कॉलम बैठा रहा वहां पे, यार ये एलटीटी का हो सकता है, नहीं हो सकता है. एंड मच लेटर वी रियलाइज कि पेड़ का शेप है यार. मतलब आप कितना डरोगे यार जिंदगी में, मतलब पेड़ का शेप है यार. बट the objective is that you have to get comfortable. You have to get comfortable with the night, with the terrain, with the forest. If it's the mountains, then it's the mountains. So living out, staying out. Once you've built up that little confidence, then you start stepping out for operations. Then you start going out. Otherwise, suddenly if you put someone in any terrain, it's not going to work out. So drills हमारी drills काफी solid होती हैं in that way. We don't rush unless it's an operation where you're supposed to rush in. There's a house entry, there's a building intervention. But if it's one of those standard ops that we love, which is ambush, raid, advance to contact, and nonsense that kind, we first get ourselves comfortable with the terrain. Very essential. खाना कितना ले जाना है, opposition किस तरीके का है, कितना equipment ले जाना है, कितना ammunition ले जाना है. All that is all worked out on what you feel the opposition is going to be. So again, sir, thanks for enlightening about this part of Kashmir part. So we have always read and हमेशा पढ़ा था sir कि from the time I remember, Prabhakaran and team LTTE, they were much more dangerous and terrorized than compared to the other group of terrorists. How was your stint there, sir? I mean, in short, how's your experience there? Yeah, Bijay, anybody will tell you that Sri Lanka, for whoever operated there, was the toughest place to operate. For the simple reason you were not trained, you were mentally not prepared. You went there as a policing force. Of course, when I went, we were very clear who we are fighting. But the initial lot went there to police. You also miscalculated the fighting ability of the Tamil. The belief till then was that Madrasi बोलते थे ना उस जमाने में. Anybody south from Narmada was a Madrasi. तो इनको लगता था कि ये मतलब लड़ने वाली पार्टियां तो सिर्फ जाट हीर हम लोग. हाँ, क्या बात है, मैं लुंगी वाला मद्रासी क्या करेगा. तो अब आप ये आपकी वो एटीट्यूड थी. ट्रेन हमने किया है साहब. अब वो एटीट्यूड आप लेके पहुंचे, and it took some time for the Indian Army. These are large organizations. Armies are large organizations. Things seep in very slowly, and they seep in with very hard lessons. So it took time for people to realize, boss, you're up against killers. They are genuinely killers operating on their terrain, trained, and they're prepared to die. You don't want to die. You want to fight. Yes. You want to get over with your objective, whatever it is. But मरने के लिए वो ब्रीड अलग है. वो आई है मरने के लिए, trained है, equipped है, ammunition है. They had mastered IED warfare. The only thing they didn't master was कितना explosive लगाना है कितने को उड़ाने के लिए. तो वो compensate करने के लिए ज्यादा डालते थे explosive. तो वो साला टैंक के नीचे लगाया तो T-72 का टर्रेट उड़ा दिया, वो पेट पे जाके लटक गया. But आप कैसे? So it took a hell of a long time. And then what was the motivation? You were constantly saying, यार what are we doing here? फिर वो rumor spread होने लगे पूरी फौज के अंदर कि यार रॉ हेल्प कर रही है. एक तरफ से वो हेल्प कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आपको लड़वा रहे हैं, मरवा रहे हैं. आधे से ज्यादा लोग बैठे हैं साउथ इंडिया में. In my first book, I give a very nice, in the preface to the book, in the second book, in the Sri Lanka book, I give an incident. मैं सेंटर में पोस्टेड था. फौज ने मैंने फौज छोड़ी 98 में. तो सेंटर वालों ने मुझे बोला बैंगलोर में, सेटलिंग डाउन देयर फॉर टाइम बीइंग. तो सेंटर वालों ने बोला सर वो घर सेटल करने के लिए एक साउथ इंडियन लड़का भेज देते हैं आपको जो लैंग्वेज जानता है. तो दे सेंट अ तमिल चैप हु कुड स्पीक कन्नड़ा आल्सो. तो रिक्रूट था, वो आ गया. अब वो बेचारे हेल्प कर रहा था, पेंटिंग्स लगा रहा था. कारपेंटर को बुलाया था मैंने.
तो वो कील लगाता था, मैं एक पेंटिंग देता था उसको वो टांगने के लिए। तो हमें पलटन ने छोटे छोटे फ्लैग्स दिए थे। वी हिट अ कैंप इन श्रीलंका। वहाँ पे वो एक फ्लैग प्रिंटिंग प्रेस रखी हुई थी, उसमें एक बड़ा फ्लैग था, वो पलटन के मेस में लगा हुआ है, और छोटे छोटे फ्लैग्स थे। वो काट काट के जो जो ऑफिसर्स ने टेक पार्ट किया, it was presented to us as, you know, so mine also was Captain Sapru for Operation Up Pavan, so and so date to so and so. It's a very prized possession and I was very proud of it. लाइब्रेरी में लगता था मेरे, तो वो मैंने उसको दिया। उसको टांगने लगा, उसको देखता है एकदम से ही फ्रीक्ड आउट, बोलता है ये नहीं लगेगा। मैंने कहा लगाओ इसको। I told this guy, ऐसे उसको बोलो अपनी लैंग्वेज में। He says he will not hang it. It's a LTTE, it's a tiger flag. So I said, the bastard knows it's a tiger fucking flag, है। So I said, regardless, आप बोलिए इसको लगाने के लिए। तो वो कहता है सर ये बोल रहा है कि अगर इसको टांगा, पहले तो बोल रहा है मुझे दे दो, पैसे कितने लगेंगे। मैंने कहा इसको बेंचो बोलो यार, पैसे ऐसे की खरीदने से नहीं है, ये हार्ड अर्नड है। तो बोलता है ये बोल रहा है कि अगर इसको टांगा तो बुरी चीजें होने जाएंगी आपके साथ। तो वो स्टूल पे खड़ा था, तो मैंने उसके छोटू सा था, मैंने उसको गर्दन पकड़ के नीचे उतारा, और मैंने ना उसके वो एल्बोज देखते थे, हम मिलिट्री ट्रेनिंग करी है ना, तो एल्बोज रफ हो जाते थे, योर kneecaps also become rough because of crawling and stuff like that. So I standard practice in Sri Lanka, people who do this. I twisted his arm. I said, bloody Pudian, LTT, Pudian was a messenger, lowest rank of LTT. तो I said, Pudian, मैं कहा ये तो लिमिट हो गई यार, बैंगलोर में मेरी घर में 10 साल हो गए यार, यहाँ फिर भी साले पीछे पड़े हुए। तो थोड़ा सा गर्दन वर्दन पकड़ के मैंने उसको, I said, Basta, I'll hand you over to the cops. I kicked him out of the house. I never saw the carpenter and I never saw the bloody the flag. Oh. Next morning it had disappeared. When he entered, I don't know. When he entered, how he did it, I never found the man and I never saw my flag. Oh. So ये 8-9 साल बाद भी ये, you know, they were there. तो उस जमाने में तो उनका सब कुछ चल रहा था यार, their safe houses, their hospital, this thing. I remember hitting a camp in Nair. वहाँ रिसीट थी रामेश्वरम की उसकी। तो फौज को ये लगता था कर क्या रहे हैं यार यहाँ पे, गेम क्या है, मतलब आपने यहाँ तो भेज दिया, अभी ठीक है, अब ये तो सर्वाइवल का है, यहाँ चैप्टर हो गया है शुरू, और आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप या तो वहाँ क्लीन अप करिए इंडिया में जो हो रहा है मेन बेस में। तो इट वाज, एंड दे वर मोटिवेटेड, दे वर गुड फाइटर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आई सेड इट एल्सवेयर आल्सो, they were very good fighters. They were very imaginative and innovative fighters. You see, and the moment you have a gorilla who can think imaginatively, this is what SF also encourages. Imagination is very important, and it is something which is absolutely killed in military thinking. Your books of knowledge and instruction are laid out. Defense aise hoga, attack aise hoga, 3:1, 4:1. There is no school which encourages you to think imaginatively. कि आप ऐसे ऑपरेट करेंगे तो क्या करेंगे, आप सोचिए। आप तो they were very imaginative. They didn't have to go to a bloody school to teach them कि ऐसे होता है, रोड ओपनिंग करो। They were not thinking straight-jacketed military. They were playing around with a army which was bogged down with this military mindset of thinking. Those who survived were the ones. अभी सुधीर की मैं बताऊं, पहली बार मैं इसको मिला वहां पे, ये पोस्ट कमांड कर रहा था, बच्चा था, प्लेस कॉल्ड रोड जंक्शन इन श्रीलंका में। I joined the SF before him. He joined 9 para later. And I remember going to his post, we were attached and I was going out. तो मुझे मिला ये, तो उस जमाने में इसका देखिए थिंकिंग। मैंने कहा सुधीर तेरे पास तो यार 25 आदमी है सिर्फ। तो बोलता यार जब मैं निकलता हूँ, मैंने शुरू से आते ही मैंने एग्रेशन दिखा दिया है। मेरे पहले कोई और ट्रूप्स थे, उनके 10 आदमी मार दिए थे यहाँ पे, तो मैं तो आते ही यहाँ पे पेट्रोलिंग शुरू कर दी ज्यादा। और जब भी मैं निकलता हूँ, मुझे पता है नफरी कम है, जो होते हैं वो यहाँ पे, तो मैं वॉलीबॉल खिलाता हूँ और कहता हूँ शोर मचाओ, वॉलीबॉल ऐसे करके बिहेव करो जैसे यहाँ लोग बहुत हैं। And you know, so some of the other things that he discussed, I could see there is a mind which thinks differently. And sure enough, you know, he moved from infantry into SF, which gave him a chance to think laterally instead of thinking straitjacket. True. So good, sir. Then the last two questions, sir.
how was the foray into writing, sir? You are an author of repute and some amazing books. So all of you guys जो सुन रहे हैं ना, you should read sir's book. एकदम awesome. आपको I remember reading the Savage Hill, sir. मैं ऐसे था कि ना next day सुबह फिर कब Yeah, उठाता बाकी हूँ दो मैं, पढ़िए कब ना. time है. It is wonderful, sir. बाकी दो अब you'll बाकी दो enjoy them. पढ़ूंगा, sir. And Yeah. Bijay and I, that I'm talking to you, I would reckon 90% of the story, incidents, places, names have been changed, but operations, incidents are true. True. Yeah, I've yeah. only spun a thread around to have a story. And they're fast-paced combat novels, and they give you a decent flavor of what special force soldiering was in those days. True. And it's a trilogy. So, as I say, I'm an accidental writer. Otherwise, if I was a professional writer or a trained writer, I would have started with Sri Lanka first. Chronologically, Sri Lanka was first, followed with my last book, and then the first book would have been the third book. But the third book came first. But as I said, I'm an accidental writer. What I was doing was I was writing my incidents, experiences on a foolscap A4 paper by hand and sending it to my father for him to read and enjoy. That's how it started. So I would sit under lamp lights, under walnut trees, in ambush. बैठे रहते हैं आप घंटे तक, कुछ नहीं करने को, तो एक रक्षा के मेरे एक किताब और एक पेन होता था, वहीं से आपने स्क्रिबल किया, कुछ लिखी जो हो रहा है. So my father would get all these. Now those short stories are all lying, they're still not been published. I need to get them out published. But coming to this one, as I say in the preface to the first book, I was climbing. We were hitting a camp, a place called Khobul Margi, and the Khobul Margi is about 10,000 feet. And we climbed the whole night. It had rained, and come morning, first light, I was sitting, taking a break, and I was sitting there chewing a puri and looking at the map because I saw a range of white mountains, snow-capped, and one of them was head and shoulders above the others. And I was wondering, ye kaun se pahad hai, north kaun sa, south kaun sa. When the Gujjar guide with me sort of saw me struggling in the map, looking at the mountains, he says, wo map pe nahi milega aapko. Wo Nanga Parbat hai, wo Gilgit mein hai. And at that stage, just looking across, and it didn't look too far. Perhaps it was only 100 miles as the crow flies. I wondered, it would be, the times had been different. One would just walk across Gilgit, Swat, all these romantic names and places. One could, wish one could just walk across. And I wondered about these people, so-called Mujahideen, what sort of people they were. Were they romantics and adventurers like us, or they religious bigots? And I had this very strong urge at that moment to capture in a tale all the dramatis personae involved in the so-called Jihad-e Kashmir, the locals, the army, and the Mujahideen. And that's how the first book was simmering in my mind for some time. फिर वो लिखी गई, फिर बैठ गया, हमने कहा किताब तो वैसे ही लिखनी नहीं थी, ऑफिस में लिखते थे, between con calls and everything. फिर ideally second book should have been on the northeast. तो वो northeast की जगह I'd written some short stories. तो वो एक पेपर मैं देख रहा था, डायरी, तो उसमें से निकल आई, where I'd written about my father being posted there and perhaps training some on the LTTE. And it was a small article, and from that I got the inspiration ki, I mean, this is a story to tell. Yeah, he trained some of them, and then the son and his own countrymen land up fighting them. तो वो श्रीलंका का एक्सपीरियंस आ गया. और तीसरी वाली जब मैं फिर नॉर्थ ईस्ट जाने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट वाज आल्सो अ टेल टू टेल. आपने किताब में देखिए पीछे एक आर्टिकल है जो मैंने कहा पब्लिशर को, मैंने कहा ये लगाना जरूरी है. तो ये आर्टिकल निकला, फेडेड येलो आर्टिकल. तो मैंने कहा यार 25 साल से मैं इस लेके घूम रहा हूँ, शायद मेरे दिमाग में तब होगा कि किसी दिन इसके ऊपर कुछ लिखा जाएगा. बिकॉज आई वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस ऑपरेशन विद दिस चैप राम कुमार एंड Manzoor Ahmed. And I spent a lot of time, broke my back climbing those hills in Doda, trying to get Manzoor Ahmed. And it was a fascinating story even then.
when I was operating with this chap. He was on murder charge, sitting behind cells, and he allowed this chap to come out of the cell to operate with me as a spotter and this thing. His classmate was the head of the Hizbul Mujahideen, Manzoor Ahmad. Fascinating story. And as we would climb, I would hear his tale, what the hell was happening. So I said, yeah, here is a story. And then at some stage, we were inserted for that operation when we had information that the Al-Faran was holed up. So our two teams, one was asked to climb from Belgaum, the other team went up to Varvan. So I said, I just need to, string the two together. Everything else is true here. So the third one came through. So ये तीन तो लिख दिए हैं, अब देखो क्या होता है बाकी. But you'll enjoy the other two. Bijay, strongly yeah, sir. I thoroughly you'll love enjoyed this. The third वाला तो बहुत मजा आया sir. I mean, whatever you are saying, since I've read, I can see that Ram Kumar, Mansoor, सब आंखों के सामने, I know that entire thing. So, Max, the one question is from my side कि for example आप लोग across the border जाते हो LOC के उस पार या तो for example surgical strike के लिए, mostly it happened during your times, बहुत ज्यादा होता रहता था. तो raid I am saying that term raid. तो उसमें माइंडसेट क्या होता है आप लोग का, क्योंकि आपको पता है कि इतना डिफिकल्ट टेरेन है. प्लस समटाइम्स व्हाट हैपेंड कि उनके भी जो एसएसजी है प्लस जो उनका टेररिस्ट का मिलिटेंट ग्रुप होता है वो भी आपके कैंप को हिट करता है. प्लस आपको ये माइंस के थ्रू सर्जिकल उस साइड जाना पड़ता है, माइंस के थ्रू बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, टेरेन भी इतना हार्ड से. तो उस समय माइंडसेट क्या होता है सर्जिकल स्ट्राइक से पहले, ऐसा कुछ होता है? Yes, Pranay, I'll be very honest. There was no trans-border operation happening when I was serving. Two happened, and it was conducted by another SF unit. This happened after, the Doda killings. There were civilians killed in Doda. But we were not allowed to cross the border. In those days, the PMO office would sign off. There was no crossing the border on the Western Front. But I did do an operation in northeast into Burma, which was a regular thing by SF units. Whenever they had information, they would cross over. So it'd be unfair to compare the eastern border with the western border. They're two different things. The West is highly militarized, probably one of the most militarized borders across the world. And crossing over on the West is a different ball game from crossing over in the East, which is full of jungle. And, you're not worried about the Burmese army coming in and chasing you. You just have to handle the militants. So the mindset for any operation is the same by and large, except here the risks are much more. The planning is much more. So you can't compare going out for an ambush operation within the country, which is 36 hours perhaps, to planning something which is across the border, because there are other ramifications if things go wrong or south. तो कैसे निकालेंगे, extraction कैसे होगा, casualty कैसे होगी, if the troop of the team is surrounded कैसे होगा, live information कैसे आएगी. So the planning for a trans-border operation is very different from, but mindset is the same. I mean, there is a risk involved, but once you are into it, your mind is occupied with what has to be done. In Sri Lanka, I used to say, I mean, मेरी तो खुद की attention span butterfly का है बिल्कुल. 1 मिनट इधर, 1 मिनट उधर, 1 मिनट इधर, मैं concentrate ही नहीं कर सकता हूँ. श्रीलंका was the only place in my life where जब मैं पोस्ट से निकलता था और जब तक मैं ambush में नहीं बैठता था, मेरे सारी senses चल रही थी. मतलब थोड़ा सा भी आपने slacken किया तो आपको पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी. So you were smelling sharper, you were scanning the forest sharper, you were treading more careful, you were completely focused because your life was at stake. So the mindset remains the same, except the planning and things like that. And the risk. The risk could be more if things go wrong. Yes, sir. Sir, can you tell something about Ikhwans who are operating in Valley? Yeah, Ikhwans were operating in the Valley and they were doing a good job till they went wild. And if I remember correctly now, this is old from the Kukka Pari hota tha inka ek. He Bandipora mein. Kukka Pari inka Bandipora mein tha. He was an ex-militant himself. He was doing a fantastic job. मतलब बांडीपोरा में रोड ओपनिंग रिस्पांसिबिलिटी सारी उसकी थी. कभी कुछ नहीं होता था.
and he was getting a lot of information. But subsequently, the army started distancing themselves because ये बदमाश हो गए फिर, extortion करना शुरू कर दिया. In any insurgency क्या होता है कि people who are close to you use you to sort out their or square their accounts with people they don't like. किसी की जमीन की प्रॉब्लम है, कोई किसी की लड़की में इंटरेस्टेड है, किसी का कोई पुराना गिला शिका है, तो वो आके आपको गलत खबर देगा. ये मैंने नॉर्थ ईस्ट में देखा, मैंने श्रीलंका में नहीं देखा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में देखा, असम में देखा, एंड ऑफ कोर्स कश्मीर में देखा. सो एज अ मिलिट्री कमांडर देयर यू हैव टू बी वेरी जुडिशियस एंड वेरी केयरफुल दैट you figure out that the information is correct या ये अपना ही कुछ. तो गुज्जरों का और कश्मीरियों का चलता रहेगा प्रॉब्लम, उसमें वो सॉर्ट आउट करेंगे. तो ये इनने क्या करा, फिर फौज को यूज करना शुरू कर दिया फॉर अ लॉट ऑफ देयर ओन illegal activities, and that is when the army started getting tough on them. But when they were raised, they had their use, and for some time they delivered well. Okay, sir. Thank you, sir. Not at all. Okay. Jai Hind sir, Hitesh Adhikari this side. Sir, नया question मैं आपसे दो, and one is professional and one is personal. So पहला जो मेरा प्रोफेशनल क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि जैसे आपने अभी थोड़ा फीमेल इंटरवेंशन और ये सब बात की थी यूएस मिलिट्री की, जो आपने वेंजर स्कूल वाली बात बताई थी. सर, कोर्ट्स ऑफ पॉलिटिकल जो इंटरवेंशन मिलिट्री में है, और जैसे हमारे माइलॉर्ड्स जो कि ऑब्वियसली कॉम्बैट से बिल्कुल हटे हुए हैं, वो लोग डिसीजन देते हैं. तो आपका इसके अकॉर्डिंग क्या है कि क्या मिलिट्री को कंप्लीटली सेपरेट होना चाहिए जुडिशियल इंटरवेंशन से एंड ऑल दीज थिंग्स से, या फिर इनका भी कोई यूटिलिटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर. In a democracy, the army must report to the political masters, and there is no question. Otherwise, ये तो बिल्कुल रोग आर्मी हो जाएगी, पाकिस्तान आर्मी की तरह, and they'll ruin the nation. So and it's a very democratic army. We all understand that. Orders आएंगे political. It is for the political masters. The political masters have to be of the caliber to know where to leave the army alone to run their affairs and where not to interfere. Yes. ये तो उनकी मैच्योरिटी. अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप क्वालिटी पुअर है, तो आपको ऐसे ही चीजें मिलेंगी. So in a democracy, this is something which will happen. This is a standard thing. It happens in every country. It depends on the maturity of the political leaders to realize where to step in, where not to step in. Yes. Okay. Yes sir, exactly. And sir, second personal question जो मैं आपसे, आपका पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन था, that was related to जैसे कि आपका जो इंसाइट है मिलिटेंट का, और आपने सबके साइड से बहुत सोचा हुआ माइंडसेट है. मतलब ऐसा हर कोई नहीं सोचता जो कॉम्बैट में जाता, पीपल जस्ट स्टे टू देमसेल्फ. बट आपने दोनों पर्सपेक्टिव देखे और दोनों समझा है कि वो क्या सोचता है, मैं क्या सोचता हूँ. तो क्या आप मतलब एज यू वर ग्रोइंग अप वर यू आइडियलिस्ट टाइप पर्सन जो कि विद टाइम प्रैक्टिकल हो गया, या फिर वर यू ऑलवेज लाइक दिस? Yeah, I'm a romantic. I'm not an idealist. I'm a romantic. I'm a dreamer. So I had a romantic notion of what soldiering should be, how I should conduct myself as an officer. I don't think so I'm an idealist, but there's a difference. And there was a streak of adventurism in me. But if you ask me कि आप में high adventure का था, risk लेने की ability नहीं थी. मैं वो भी खुद confess करता हूँ कि while I would dream to do something, you know, there's another part of me which would say, no, let's just sit down, think this over properly. But yes, I'm a dreamer. Yes, sir. I got the vibe from you, sir, so I wanted to ask you this. Thank you, sir. Thank you, Bijay bhai. Anytime. Thank you, sir. Jai Hind. Not at all. And thank you